हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यही वीडियो रे आज आम पॉलिटिकल ऑनर्स +3 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर किछि कोर 1 रो किछि 2 मार्क्स सिलेक्शन क्वेश्चन गुड को डिस्कशन करबा। और वीडियो आगु हम कहबी जे आपन माने यार नोट लिब्रे डाउनलोड कर पारे। तो चलो स्टार्ट करबा। राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विषय रे गोटे शॉर्ट नोट पर 2 मार्क्स क्वेश्चन पढ़ी पारे। तो से लिखो। तो कौन देखिए हमें The constituent assembly is an assembly of chosen representatives who gather to a draft constitutions. It is also called the constitutions assembly. हम देख लीजिए constitution assembly कौन ना ये an assembly जहाँ की chosen representatives who gather to a draft a constitution. It is also called the constitutions assembly. और जो the constitution is fundamental document for the functioning of the states. माने कौन द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल डॉक्यूमेंट जहाँ कि कौन स्टेट में फंक्शनिंग करछि। माने स्टेट फंक्शन करे पे कौन जो हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गोटे फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स। इट कैन नॉट बी अमेंड और मॉडिफाइड बाय द नॉर्मल लेजिस्लेचर प्रोसीडर्स। माने कौन नॉर्मल लेजिस्लेचर प्रोसीडर्स रे एटा के बेले कौन हो बी अमेंड संशोधन कि मॉडिफाई मते हे परिबन। इट इज जनरेट्स ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। माने कौन एटा गोटे जनरेट गोटे ट्रस्ट जनरेट करछि जहाँ कि क्या मध्य ना गवर्नमेंट और सिटीजन मध्य गोटे कोऑर्डिनेशन रोची। आ कौन अच्छी देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। माने कौन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जी की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फादर जानते हैं। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन व्हाट वाज द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नेचर कौन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया consisting of indirectly elected representatives was established to draft a constitution for India. It existed for approx 3 years. The first parliament of India after independence in 1947. Next time कौन देखें what is drafting committee। तो drafting committee मतलब important। what is drafting committee कौन on 29 August 1947 the constituent assembly set up a drafting committee where under the chairmanship of डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन ना 1947 अगस्ट 29 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन कर गोटे सेटअप कर ड्राफ्टिंग कमिटी क्या अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अंडर से ड्राफ्टिंग कमिटी सेटअप कर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू प्रिपेयर ए ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। टू प्रिपेयर ए ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कमिटी। मैंने कौन प्रिपेयर ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो ड्राफ्टिंग कमिटी गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट कमिटी। It was this committee that was entrusted with the task of preparing a draft of a new constitution. Next is philosophy of Indian constitution. The Indian constitution philosophy कौन the philosophy of Indian constitution that India is a sovereign, socialist, secular and democratic republic. It provides justice, liberty, equality and fairness for the people. तो बहुत सहज अच्छी किसी प्रश्न मुझे भाव आप बुझीपारे। What are the salient features of Indian preamble? तो इंडियन preamble salient features मैंने कौन रही। preamble declares India to be sovereign, socialist, secular and democratic republic। मैंने कौन हम इंडिया कौन सोशलिस्ट समाजवाद सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। द ऑब्जेक्टिव्स stated by the preamble are to secure justice, liberty, equality to all citizens and promote fraternity to maintain unity and integrity of the nation। नेक्स्ट टाइम देखिए कौन वाई इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री डिस्क्राइब इट। मैंने कहीं इंडिया गोटे सोवरेन कंट्री पर डिस्क्राइब है कौन इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री इट बिकॉज इट मीन्स इंडिया इज ए सुप्रीम पावर एंड नो इंटरनल ग्रुप्स और द एक्सटर्नल अथॉरिटी could undermine the authority of the Indian government। कौन इंडिया सोवरेन कंट्री इट मीन्स इंडिया इज ए सुप्रीम पावर ऑफ नो इंटरनल ग्रुप्स और द एक्सटर्नल अथॉरिटी could undermine the authority of the Indian government। As a sovereign state, India is free from any kind of form of foreign interference in its domestic affairs। Next time देखिए कौन why India is a union of states describe it। India union of states को describe करो मैंने कहा कि the Indian constitution
The Indian Constitution in Constitution article describes the country as Union States of all states Union of States মানে কোন article 1 কোন describe করছে যে ইন্ডিয়া হচ্ছে কোন Union of States. Its constitution is federal in nature according to Dr. B.R. Ambedkar. The first Union of States has been federation of states for two following reasons. The two following reasons कौन कौन रही? The India Federation is not result of an agreement among the states like the USA ମାନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଫେଡେରେସନ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା କ'ଣ କୌଣସି ମାନେ ଯେଉଁ ଫେଡେରେସନ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟା କିଛି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଭଳି ହେଇନି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଫେଡେରେସନ୍ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଲାଇକ୍ କାହା ଭଳି ୟୁଏସ୍ରେ କାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟ୍ରି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଭଳି ହେଇନି. ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ହାଭ୍ ନୋ ରାଇଟ୍ ଟୁ ସେଟିସ୍ ଫର୍ ଦ ଫେଡେରେସନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ତାର ସେତିକି ରାଇଟ୍ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କେ ସେମିତି ଅଲଗା ହେଇପାରିବେ. ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଫେଡେରାଲ୍ in structure and unitary in spirit ମାନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ କାହିଁକି ଫେଡେରାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସଙ୍ଗେ କିନ୍ତୁ ୟୁନିଟାରୀ ଇନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍. ଦେଖିବା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ଫେଡେରାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଜ୍ ଏ ରିଟନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍. ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ଫେଡେରାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଜ୍ ଏ ରିଟନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଡିଭାଇଡ୍ସ ଦ ପାୱାର୍ସ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥର ଯେଉଁ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଛି କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ. ଏଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ବାଇ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି କାହା କାହା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ସିକ୍ୟୁର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ମାଧ୍ୟମରେ. ଅଲଦୋ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ଏ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ୱାନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଟିଜନସିପ୍ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁଣି ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ନେଚର ଅଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ୱାନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ single citizenship, single judiciary. It has been transformed into a union due to the emergency situation and many symptoms are here ମାନେ କ'ଣ ଆଉ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ତଥାପି ଏଥିରେ କିଛି ଅଲଗା ଲକ୍ଷଣ ଯାହା କ'ଣ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ୱାନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଏକକ ସମ୍ବିଧାନ ଏକକ ନାଗରିକତା ଏକକ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଆଉ କ'ଣ ଯେଉଁ it has been transferred a union due to the emergency situation and many symptoms ମାନେ କ'ଣ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଐକ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଧାରଣ କରୁଛି. ସୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଫେଡେରାଲ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଟାରୀ ଇନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅର୍ କୋସି ଫେଡେରାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି. କେସି ହୋଏର୍ ଅଲସୋ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇଟ୍ ମାନେ କ'ଣ କେସି ହୋଏର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ କୋସି ଫେଡେରାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କହୁଥିଲେ. ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ is a mixture of rigid and flexibility. Explain it. ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା କ'ଣ a federal structure is provide in the Indian constitution. There is a defined in a democratic jurisdiction in the center in all states. There are provisions that can also change the federal structure. These are the reasons why Indian constitution is both rigid and flexibility. Next time देखो what is bicameral legislature. The bicameral legislature माने कौन? A bicameral legislature is a legislature with two houses. माने कौन गोटे bicameral legislature दुटी हाउस थाए कौन होता है इंडियन पार्लियामेंट consist of two houses कौन लोकसभा राज्यसभा upper house और lower house. What is the parliamentary form of government? The parliamentary form of government माने कौन? A parliamentary form of government is a system of democratic governance of state where the executive derives its democratic legitimacy from its ability to command the support of a legislature to typically a parliament to which it is accountable. Next is what is universal order to suffrage. The universal order to suffrage means what? Universal suffrage or franchise ensures the right to vote for as many people who are bound by government laws as possible as supported by the one person one vote. माने कौन universal order to suffrage माने मैं simply बुझिया कौन ना one person one vote मतलब कोई परिवार. नेक्स्ट देखिए कौन व्हाट इज सिंगल सिटीजनशिप. तो सिंगल सिटीजनशिप माने कौन सिंगल सिटीजनशिप restricts a person from claiming the citizenship right of his or her state. His concept is practiced to bind people who belong to different culture and
spiritual background ମାନେ କ'ଣ single citizenship restricts a person from claiming the citizenship rights of his କିମ୍ବା her state or concept is practiced to bind people who belong to different cultural and spiritual backgrounds. Single citizenship only allow the people to represent their nation ମାନେ କ'ଣ single citizenship କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ନେସନକୁ ହିଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା what is the single integrated judicial system? Single integrated judicial system. India has a single integrated judicial system which implies it India not have separate laws for each state ମାନେ ସବୁ laws ପାଇଁ each ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ state ପାଇଁ କିଛି separate law ନାହିଁ। Instead the country has one civil and criminal system operating through the length of breadth. Next time देखो what is DPSP ବା Directive Principles of State Policy. It refers to the principle or order in the Indian Constitution that directs the policy of a state and indicate who the state policy should be. DPSP aim at ensure socio-economic justice to the people and establishing India as a welfare state. ମାନେ କ'ଣ DPSP କ'ଣ କରୁଛି ଏମ୍ ହେଉଛି ensuring socio-economic ଆଉ justice to the people, justice ଦିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ establish India as a welfare state ଆଉ welfare state India କ'ଣ establish କରାହେବ। DPSP are in the form of instruction by guidelines to the government at the center as well as states. Next देखिए କ'ଣ discuss the types of DPSP ବା discuss the types of directive principles of state policy. Article 36 to 51 under Article Part 4 of the Indian Constitution deal with the directive principle of state policy. Article କ'ଣ 36 ରୁ 51 जो Part 4 ରହିଛି ସେଟା ଆମ Indian Constitution କ'ଣ କରୁଛି DPSP କୁ ସହିତ କ'ଣ ଡିଲ୍ କରୁଛି। They are borrowed from the Constitution of Ireland ମାନେ କ'ଣ DPSP ଟା ଆଇର୍ଲାଣ୍ଡର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଛି ବା ୟୁଏସ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଛି which had copied it from the Spanish constitution. DPSP are usually classified into three types କ'ଣ socialist, Gandhian and liberal intellectual principles. Next time देखिए କ'ଣ what is socialistic principles of DPSP. Article 38 the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting a social order by ensuring social, economic and political justice and by minimum inequalities of income, states facilitating opportunity. देखिए କ'ଣ socialistic principles. Next time देखिए what is the Gandhian principle of DPSP. The Gandhian principle କ'ଣ that this concept embody Gandhi's rebuilding आइडियोलोजी मैंने कौन गांधीजी जब गांधीन प्रिंसिपल तो गांधीजी सब जो आइडियोलोजी तापर से कौन बेस बिल्ड है which he separate across the national government. Gandhian principles are this article 40 organization of panchayat self government, fair wage and the standard of life on article 43. Article 43b कौन करछि ना promotion of cooperatives. Next देखो article 46 protection of SC, ST and weaker section from exploitation. Article 47 कौन करछि nutrition standard of living and public health. Article 48 कौन करछि scientific agriculture and animal husbandry. देखले कौन DPSP Gandhian principle of DPSP. Next time देखना what is liberal intellectual principle of DPSP. The term liberal intellectual principles concept of a series of articles that dominates the concept of liberalism. The liberalism is a series of articles that dominate liberalism concept and equality rights to the citizens of India without any discrimination. Now, बिना discrimination रे समस्त equality rights मिलिबो का सब citizen मानको. Write the difference between fundamental rights and DPSP. The fundamental rights ଆଉ DPSP देखो difference कौन से हम देखिबा. तो कौन fundamental rights are the basic rights government by the Constitution of India citizens माने कौन fundamental rights कौन करछि are the basic rights जहाँ की जो rights are guaranteed by the Constitution of India citizens. But the directive principles of state policy is a set of guidance to be followed by the Indian government while formulating policies and enacted. मैंने कौन
फंडामेंटल राइट्स जो रही है आमर कौन गारंटेड दिया होची कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन आम इंडिया सिटीजन मानक फंडामेंटल राइट्स सब गारंटेड दूसरी, किंतु मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज सेट ऑफ गाइडलाइंस माने गोटे गाइडलाइंस सेट ऑफ टू बी फॉलोड बाय द इंडियन गवर्नमेंट व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनएक्टेड लॉज। तो ये यूनिट 1 सिलेक्शन 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर।